अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे our lecture is about why ideal gases why ideal gases deviates from ideal behavior. Why ideal gases deviates from ideal behavior. Second one is why gases why ideal gases behave like non-ideal according to falsy postulates of the kinetic molecular theory that is done in the 1857. Falsy reason behind it, falsy postulates of kinetic molecular theory, falsy postulates of kinetic molecular theory. Number one, they said that they have gas molecule have no force of attraction, no forces between the gas molecule, but there is negligible force of attraction between the gas molecule in non-ideal behavior. So that number two falsy postulate is there is actual volume of actual volume of the gas molecule is negligible to the volume of container. As compared to volume of container, the one gas molecule is negligible. The volume of one gas molecule is negligible as compared to volume of container. There are two Fasti postulates. On these two Fasti postulates, these two Fasti postulates count the ideal gas behavior, but in non-ideal condition of gases, their postulates are false because for these two postulates, for the ideal are real gases. Ideal are real gases, but in the non-ideal condition, the gas molecule, the gas behavior of the gas molecule is different from it from it. The condition of non-ideal gases are the condition on which non-ideal gases condition of non-ideal gases non-ideal non-ideal gases or non-ideal gases are number one at low temperature gas molecule become non-ideal. Number two, at high pressure gas molecule will be non-ideal. Let let's we'll discuss about these two factors, how gas molecules deviate from ideal behavior. Number one, at low temperature
At low temperature, gas behave like non-ideal. At low temperature, gas molecule behave like non-ideal. Gas molecule behave like non-ideal. How it is possible? When the voltage, the low pressure, low temperature, at high temperature, gas molecules are further apart with each other. At high temperature, gas molecules are further apart with each other due to high kinetic energy. Due to high kinetic energy, gas molecules are further apart with each other even in the container. When the temperature will be low, the gas molecules are come closer to each other. Come closer to each other. So at low temperature, at low temperature, the gas molecules are come closer to each other. So they are liquefy, they are liquefy, they behave like non-ideal behavior. They are liquefy and behave like non-ideal behavior. Let's we discuss about in the statements in the low temperature. The gas molecules are come closer to each other. The kinetic energy will be low. Kinetic energy will be low. The gas molecule have low kinetic energy. They are come closer to each other and they have significant intermolecular forces. They have significant intermolecular forces. Here, the forces are significant. From the previous lecture, the gas molecule have significant force of attraction. They behave like non-ideal gases. Non-ideal gases at low temperature, but at high temperature, kinetic energy will be high and forces are negligible. Forces are negligible among them. So the gas molecule have negligible forces. They behave like ideal gases. So we can say that at high temperature, gases behave like ideal, but at low temperature, gases behave like non-ideal. For example, at room temperature, at room temperature 25 centigrade, the SO2 gas molecules behave like ideal. Due to high temperature, it has a negligible force of attraction between the gas, their molecules. But at low temperature, the gas molecule will be non-ideal just like minus 10 centigrade. The SO2 molecule behave like non-ideal. So that we can say that the ideal gas molecule lies at high temperature, but at low temperature, non-ideal behavior of gases will be occur. Next, next factor is at high pressure. At high pressure,
gases become non-ideal. Why and how? We will discuss about it. Gas molecules will be non-ideal at high pressure. First of all, we draw some diagram to understand this topic. At low pressure, the gas molecules are further apart with each other. At low pressure, the gas molecules are further apart with each other. The volume of gas molecule will be negligible to the volume of container. Actual volume of gas molecule is very small as compared to volume of container. It can be negligible at low pressure. The volume of gas molecule is small as compared to volume of container. Volume of as compared to volume of container. Volume of container can be negligible. Here we can consider as negligible volume of gas molecule. If a gas molecule is negligible if as compared to volume of container, it behave like ideal gases. In the previous lecture, we will discuss about ideal gas molecule as negligible force of attraction so that at low pressure gases behave like ideal. If we will discuss about if pressure is high, the gas molecule pressure is high, volume of gas molecule will be constant, but the volume of container will be reduced. So we will discuss here the volume of gas molecule is not negligible to the volume of container. By increasing uh, pressure, the actual volume of gas molecule is not negligible to the volume of container. Volume of gas molecule is more significant as compared to volume of container because the volume of gas molecule will be constant, but applying high pressure the volume of gas container will be decreased more significant as compared to volume of container, so that we can't negligible the actual volume of gas molecule at high pressure and cannot be negligible at in this case at high pressure. If the volume of gas molecule cannot be negligible, the gas molecule will become non-ideal. Will become non-ideal, behave like non-ideal gases, so that we can say that low pressure the gas molecule will become ideal and high pressure gas molecule will become non-ideal. We will discuss about with the example here. The volume of container will be 24,400 centimeter cube. But the actual volume of gas molecule will be 32 cm cube. But at high pressure, the volume of container will become reduced to 22 4 cm3, 224 cm3, but the volume of uh, gas molecule will constant, that is 32, so that
Actually, the volume of gas molecule will be gas container will be reduced, but the gas molecule volume will be constant. So that we can't negligible the actual volume of gas molecule at high pressure. So at low pressure, at low P value, the volume of container container is 24 to 400 cm cube. Actual volume of gas molecule, actual volume is 32 cm cube, but pressure at high pressure the volume of gas container will be reduced. Volume of gas container will be reduced to 2 to 4 cm cube, but the actual volume will be constant, that is 32 cm cube. Here in this case, we can't negligible the volume of gas molecule as compared to volume of container. And then we will discuss about the graphical representation, graphical representation of non-ideal behavior, graphical representation of non-ideal behavior. First of all, we draw the graph. If we draw the graph in such like that, according to graph, the difference on the y-axis, that is 0.4 difference, we can draw the value with a difference of 0.4. Here y-axis, according to general gas equation, ideal gas equation, PV is equals to nRT, where number of moles of gas molecule is 1, PV into RT is equals to 1. That must be for ideal saturation. For ideal saturation, for ideal gases, PV over RT is equals to 1, because the volume of gas molecule is greater on low pressure. The compressibility factor, that is a compressibility factor, that is always equals to 1. Okay. If pressure is high, volume will be reduced, then the P into V over RD, that is less than 1 or greater than 1 for non-ideal saturation. Non-ideal gases, the PV over RT compressibility factor is less or greater than 1. We will discuss about the graph. Here, that line is indicate compressibility factor PV over RT, that is a compressibility factor. That is a compressibility factor. Compressibility factor is 1 for ideal gases. For ideal gases, that must be 1. But on applying high pressure,
just like 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. The lines of non-ideal gases are not made with ideal gases. So we count as a real gases, we count as a real or non-ideal gases. Ideal gases are also called general gases, but non-ideal gases are called also called for real gases. Non-ideal gases are called real gases. Here we discuss about the graph. If gases are non-ideal, if gases become non-ideal, then the graph will be different. For helium, its line will be close to ideal. For hydrogen, its line above from helium. For nitrogen, it deviates from negative to positive deviation. For carbon dioxide, there is CO2. In the case of ammonia, in the case of ammonia, it behave like more non-ideal, and in the case of in the case of methane and ethane, in the case of ethane, it will be more non-ideal. In the case of ethene, it is more non-ideal behavior because by increasing pressure, by high pressure, by increasing pressure, the volume will be reduced and gases are more non-ideal. Why gases show negative deviation? Negative deviation. Negative deviation. Why gases are show positive deviation to ideal gases? First of all, we'll discuss about the negative deviation. If by increasing pressure, the gas molecule, due to high force of attraction, due to first of all high force of attraction, it due to attractive forces, due to attractive forces, gases become non-ideal with negative deviation, and some the force of repulsion between the gas molecule, repulsion force can create the positive deviation of the gas molecule. Here we discuss about the graphical representation of gas molecule. Why gases are deviate from non-ideal behavior at high pressure. अब हम इसको ज़रा ट्रांसलेट कर देते हैं उर्दू में. हमने आज डिस्कस करना है बेटा आइडियल गैसेस क्यों डेविएट करती हैं नो नो आइडियल बिहेवियर से, या आइडियल गैसेस क्यों बिहेव करती हैं नॉन आइडियल. जब हम दो पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के, वो कहते थे इज नो फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल. हालांकि
कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस मॉलिक्यूल में होती है। जब भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास हमारे पास ये दोनों कंडीशन जनरल गैस इक्वेशन की हैं और आइडियल गैस इक्वेशन की है कि एक्चुअल वॉल्यूम हम निग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं जहाँ पे गैसेस नॉन आइडियल बिहेव करते हैं। एक पहली कंडीशन है जब हमारे पास लो टेम्परेचर हो। जब लो टेम्परेचर होगा तो गैसेस नॉन आइडियल बिहेव करेंगी, जब हाई प्रेशर होगा तब भी गैसेस नॉन आइडियली बिहेव करेंगे। अब पहले हम पढ़ते हैं लो टेम्परेचर पे गैसेस नॉन आइडियल बिहेव कैसे करेंगे। एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब हाई होती है तो आपके पास फोर्सेस क्या हो जाती है, निग्लिजिबल हो जाती हैं। और आपने पढ़ा हुआ है जब गैसेस की फोर्सेस निग्लिजिबल हो जाए आइडियल गैसेस बन जाती हैं। अब जब आप लो टेम्परेचर देते हो काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्सेस क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। जब सिग्निफिकेंट होंगी तो आपकी गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगी, नॉन आइडियल। फॉर एग्जांपल एट रूम टेम्परेचर हम SO2 की बात करें तो याद रखें कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा SO2 नॉन आइडियल बिहेव करेगी, आइडियल सॉरी बिहेव करेगी। जब टेम्परेचर लो देंगे ये गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, SO2 के नॉन आइडियल बिहेवियर में हो जाएंगे। आई थिंक तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाई प्रेशर पे गैसेस नॉन आइडियल कैसे बिहेव करती हैं। आप डायग्राम को जरा देखें कि जब आप लो प्रेशर देते हो आपके पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये इतना वॉल्यूम होता है और गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 32 होता है। हम कह सकते हैं ये वॉल्यूम ज़्यादा है, ये वॉल्यूम वेरी स्मॉल है। हम कह सकते हैं इट कैन बी निग्लिजिबल। कहाँ पे, जब आपके पास गैसेस क्या होंगी, आइडियल होंगे। जब आपके पास हाई प्रेशर होगा गैसेस क्या होंगी, नॉन आइडियल होंगी। हाई प्रेशर से कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब 22,400 से ये जस्ट 224 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल उतना ही रहेगा, कितना है, 32। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इट कांट बी निग्लिजिबल, जहाँ पे हम निग्लिजिबल ना कर सकें उस गैस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं बेटा, नॉन आइडियल गैसेस में शुमार करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल में आप देख सकते हैं लो प्रेशर पे आपके पास वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना कंटेनर का वॉल्यूम होता है। बट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना होता है, 32। इसी वजह से हम जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट गैस जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, गैस कंटेनर का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे हम निग्लिजिबल गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहली बात रखे, याद रखें अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन हम n की वैल्यू को 1 कह देते हैं। जब नंबर ऑफ मोल 1 कंसीडर करते हैं फॉर ऑल गैसेस, जब 1 कंसीडर करते हैं तो ये RT उधर जाके डिवाइड हो जाएगा P/V/RT। ये होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब ये 1 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लो प्रेशर देते हैं आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा आपके नंबर ऑफ मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो जाएगा फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, नॉन आइडियल गैस में जब प्रेशर हाई करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम जब कम होगा तो यही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज लेस देन 1 हो जाएगा फॉर नॉन आइडियल गैसेस। अब जरा हम ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ को ड्रॉ कैसे किया कि हमने वाई एक्सिस पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 0.4 के डिफरेंस से रखा और यहाँ पे 200 के डिफरेंस से आपने प्रेशर को रखा। अब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है अब ये लाइन जो है
ये किसकी, या आइडियल गैसिफिकेशन की या जनरल गैसिफिकेशन की है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपकी गैसेस क्या हो जाएंगी, नॉन आइडियल हो जाएंगी। गैसेस क्या हो जाएंगी, नॉन आइडियल। आप देख सकते हैं ये आइडियल लाइन से डेविएट कर रही हैं। डेविएट का मतलब चेंज हो रही है। एक होती है नेगेटिव डेविएशन और दूसरा होता है पॉजिटिव डेविएशन। अब गैसेस नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करती हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज़्यादा होंगी वो नीचे की तरफ ग्राफ लाएंगी, और फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। ये दोनों डेविएशन नॉन आइडियल बिहेवियर में होते हैं, आइडियल बिहेवियर में ये दोनों कंडीशन नहीं होती। आई थिंक सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।